जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम हमें इसमें यह दिखता है दैट यू हैव टू गो फॉर अ मेजर कैश आउटफ्लो इमीडिएटली, और दिखता ऐसा है दैट इट इज कॉस्टलियर देन द ऑर्गेनिक ग्रोथ। वजह उसकी क्या है? दैट एट टाइम्स यू हैव टू पे for the goodwill of the existing firm as well. So when you are actually setting up your own setup, you don't have to pay for any of the goodwill of the existing players. However, जब आप किसी को let's say Walls ने Polka को take over किया, तो उन्होंने आप क्या समझते हैं सिर्फ assets की value पे की होगी? जी नहीं, उन्होंने उस brand की value भी पे की होगी और उसके साथ साथ they must have paid some serious amount of goodwill as well. So acquisition can become slightly expensive. बहुत सारी सिचुएशंस में हमने ये सुना और देखा that when one organization takes over another, there is a very bright possibility of a clash in cultures, a difference in the way people think, the way they look at customers, the way they work, and so on and so forth. At times organizational structures में भी फर्क होता है। जब आज से कुछ साल पहले ABN AMRO took over one of the local banks which was Prime Bank, तो उनके जो organizational charts थे उसमें काफी difference था। अब हुआ क्या कि somebody who was a vice president in Prime Bank was supposed to become an assistant manager or manager in the new setup. तो obviously उनकी salaries में भी फर्क था, लेकिन यानी ABN AMRO में salaries higher थी as compared to Prime Bank. But for someone who was known as the vice president, उसको आप कहें अब आप assistant manager हो गए, तो उसको थोड़ा सा एक shock की feeling यकीनन थी। इसी तरह से the way people operate in organizations, the way people treat customers, बाज़ औक़ात उसमें बड़ा difference होता है। ये हमने European examples में भी हमने कई जगह देखा that when Americans came and took over some of the British organizations या European organizations, तो उन दोनों के काम करने के अंदाज में बड़ा फर्क है। The way Europeans work and the way American work, इसमें काफी difference है, और वो cultural clash बहुत जगहों पे बड़ा visible हो जाता है। So this is one of the issues that they have to look into. इसी तरह से बाज़ औक़ात आपके पास जब आप acquisition पे जाते हैं तो आपके पास redundant assets आ जाते हैं। When Faisal Bank took over RBS, so उनकी बाज़ branches आमने सामने बहुत सारी branches हो गई हैं, एक ही रोड पे 6-6, 4-4 ब्रांचेस हो गई उनकी, जस्ट बिकॉज पहले एक ही जगह पे फैसल बैंक की 2 ब्रांचेस थी, वहीं पे आरबीएस की भी 2 थी। नाउ दे हैव 4 ब्रांचेस इन वन लाइन। सो फिर उनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को उनको वाइंड अप करना पड़ेगा, विच इज अनदर हैसल। एंड इसमें नुकसान बाज़ औक़ात ये होता है कि जो वैल्यू आपने उन एसेट्स को लेने की पे की होती है, जब आप उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलती, बाज़ औक़ात उसमें नुकसान का चांस होता है। So although we have discussed a number of advantages and disadvantages, but the biggest disadvantage in my opinion is the risk factor. Risk factor क्या है? यूं देखिए that when you are about to take over an existing firm and they are trying to sell that to you, that small organization is trying to sell their operations or their shares to you, they will try to give you a rosy picture. They will try to tell you whatever their strengths are, but it is not really necessary that they will give you exactly what is wrong with the organization, what are the problems that they are exactly facing. So if you have not done enough research, then there is a possibility कि आपको कुछ अरसे के बाद realize हो that you have jumped into a serious mess, and that's, my dear friends, that's a big risk. Financially अगर आप देखें so there is a possibility, in some cases we have seen that the return on capital employed goes down when you are acquiring an existing asset, especially if the returns that you are expecting are not up to the mark. So in general अगर हम इसको एक जगह conclude करें तो acquisitions have their own advantages. If you want to grow rapidly, if you want to enter into a market quickly, acquisition is the best method. However, you have to be cautious, you have to be critical in evaluating whether to go for a certain acquisition or not.